Hi, Nachiket. Hello, Yashashri and Vikaram, Ansh, Ashwani. Hi, Suresh. How have you been? So, anybody who can switch on their video will be great. Otherwise, we are good to go. So, I thought, yeah, great. Let us have a classroom experience, because I cannot be physically at your place and you cannot come here because I'm here sitting in Delhi. So let us have some classroom experience and you yourself feel comfortable that you're speaking to your mentor and who is going to guide you in this journey. Hello, Abhi. Okay, so we have got like 7 minutes to join. There are a couple of people will join simultaneously. So I just wanted to understand before I should say anything so that we have got at least 5, 6 minutes. So let me understand from your point of view, anybody that what is actually bothering you in between yourself and between your success? What is that one doubt or one clarity you want? Just let me know. Um, Let us have a set of questions here and then we will take it forward. Whoever, I mean, yeah. Yeah, Suresh. Sir, actually, next month 10th exam is going on, sir. Prelims. Right. I applied for first time. I applied for first This time. is your first time you are appearing? I prepared. Okay. Yes, sir. I prepared from some random Okay. resources Okay. from YouTube, Telegram, and so much on there. Telegram. In 10 days, any suggestions for revision? That's very short notice. Yes, sir. Yeah, but Yes, sir. Any key points so like what do you expect in from yourself in this examination? Sam lack with current affairs, sir. You mean that you are giving this exam just to know that how this exam is actually it looks like and feels like when sitting in the examination hall, right? Yes, sir. Yes, ठीक है. sir. So first thing, if you are going with this mindset, then detach yourself from the result. Okay, sir. First thing, Okay, sir. today onwards, if you will detach yourself from the result, then whatever the result will be, pass, fail, it won't harm you. It won't affect you, actually. And honestly, because I know Okay, sir. UPSC needs basic average 1.5 years of preparation, average. So I know that you have Okay, sir. you haven't done that, but detach yourself from actually the results. You give your exam to build your confidence. Okay, look in the eye of every question. Okay, sir. Let not that question bothers you, or it that fear of examination hall. You try to eliminate that because that is very very important. It is equally important the way we study actually. So consider that this Okay, prelims, sir. you are going to exercise your mental health. I know that you are not prepared fully, Okay, sir. but go Okay, there and have mental examination. It's like how you building the pressure. Look at those aspirants sitting and writing the exam. Watch the okay, sir. newspaper, watch the time. Okay, sir. Okay, detach yourself from Okay, sir. results, and when you'll come out, whatever be the results, do not waste single day. Keep your absolute aim for 2022. Okay, sir. And I trust that should you follow the Okay, right sir. regime, you will crack it. Okay, sir. Okay, because Okay, sir. um, Uh, you think this formula that in prelims
you've got 20,000 seats. Are you that confident that in 2022, when you will appear, you will be one of the 20,000 seats? Yes, sir. Of course. Yeah, it's not that Yes, tough sir. actually. Cracking mains is of course, that's a heavy potential. But prelims, you've got 20,000 seats. So 20,000 students get selected and they give mains exam. They write mains exam. Then further they got bifurcated and then filtered and then they give interview. Okay, so, Okay, right. sir. Okay. Yeah. So bring out, And also Okay. I have one doubt, sir. right. And also, I have one doubt, Actually, sir. watch your video regarding to Habitat. Actually, watch your video regarding to Habitat Oh, subscription. how can I join, sir? In that Habitat Oh, how can I join, sir? Array is In that, simple, yeah. Habitat You just click subscription. here, the link which I have given here in the chat box. Okay, sir. Open the chat box. Everybody, I mean, open Okay, the sir. chat box. I have sent you something. With that, you guys can go and log in. And okay, so we have got Govind and Swaroop, Karthik, Ashwani. Okay, so guys, yeah, ask me any questions, any doubt you have before I should start. If you are not comfortable speaking, you can write in the message box. Yeah, so Suresh, did you find that? No, sir. I didn't. No, sir. I didn't. Acha, chalo, I will send you the link on my space. I'll send you the link on my space where I chat every day, right? So you must have you have seen that. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. 1 second. Sachin. Yeah, so Suresh, I've just sent on that message bar. Okay. All right, so I think it's 8 p.m. and I think we should start, right? So Karthik, he asked me that, sir, what if we are not prepared, then we would lose one attempt. Of course, you're going to lose an attempt. 1 second. Of course. So Suresh, you can mute your mic. Okay, sir. Yeah. Okay, sir. Right. So Karthik, you've asked a very, very good question, very valid question. That what will happen to those people if they are not prepared and then they are giving an attempt? So as I discussed with Suresh, that if you are not prepared and you're giving an attempt, then so primarily what I have informed him, what I have guided him, I have told him that detach yourself from the result. Okay, primarily go for exam just to build your mental health. I have seen students. There are a couple of my students. They make this belief that, sir, I'm going to crack in my first attempt. Sir, I don't want to give any other exam. Sir, I don't want to deviate myself from UPSC. I am just focused only on UPSC, just UPSC. And you know what will happen? When you, for the first time, when you will give, and so you know what will happen? So for the first time when you will write UPSC exam, sitting in the examination hall, your mind-body connection will not match.
because throughout the entire year you have worked hard, you have prepared a lot, and you're working hard, and at that time you will have anxiety issue, and that time you will have time management issue. At that time you will see lots of aspirants sitting in the examination because you haven't sat and given any examination in the examination hall. So not only UPSC, you can go for any state pieces examination. At least वो feel तो आनी चाहिए ना कि I have given some state examination. किसी को बताना मत, चुपके से धीरे से जाना and just give that examination. This is your लड़ाई, this is your war, man. You have to fight it. Okay, do not tell anybody. And especially, I recommend those people who are preparing for UPSC Civil Services exam and wanted to be an IPS officer and Class 1 services, किसी को मत बताओ कि आप तैयारी कर रहे हो. Do not tell anybody that you are preparing for examination, actually. Just let few closed ones, maybe your mom, dad, your brother, थोड़े कुछ एक दोस्त को बता दो, ठीक है चलेगा. लेकिन वो अपने चाचा को, मामा को, फूफा को, किसी को मत बताना. ठीक है, अगर कोई पूछता है, if somebody is asking you, हाँ हो रही है, हाँ चल रही है, कोशिश कर रहे हैं. Okay, so that's the approach you have to follow in the society, that हाँ हो रही है, चल रही है, but you know that within yourself what is battling. Okay, so let us start. Let me start the session, start the webinar here, and I welcome you all. Thank you so much for your time. Stay with me for next 45 minutes, and I promise that you will take something from here, which will be very, very valuable, actually. And right now, we are sitting in front of each other. Let us have a classroom experience. आप भी कुछ बोलिए, और फिर मैं भी कुछ बोलूँगा, मैं कुछ बताऊँगा. There are a lot of experience and lot of stories which is inside me. It's upon you how you are utilizing. So ask. जो एक बात याद रखना जीवन में, जो आदमी क्वेश्चन पूछता है वो भले 5 मिनट के लिए उसको लोग मूर्ख कहेंगे, उसको बेवकूफ कहेंगे, लेकिन if you will not ask question in where platform, then lifetime you will remain moron. You कहते हैं ना वो तो पागल, तो कुछ पूछता ही नहीं है, dumb. So I'm just saying, just try to be fool, try to be very natural for another 5-10 minutes. ठीक है? Don't hesitate, because this is your war, this is your लड़ाई, this is your journey. I am just a सारथी. सारथी, you know, अर्जुन. और मैं कृष्ण की बात नहीं कर रहा हूँ. I'm just the driver. I will drive you guys. I will guide you guys. Okay, so please ask and ask and ask. शर्माना मत. यहाँ शर्माए तो फिर शर्मा ही जाओगे हमेशा के लिए आप. So Ashwani is asking for what's the agenda? Yes, Sachin, you were saying something? Sachin, you are on mute, I think. We cannot hear you. Maybe you can type. आप type कर दीजिए यहाँ पे, so that we will get to know. Okay? Right. So, first question. First agenda. Somebody asked me about the agenda. What is the agenda? Agenda is यहाँ पे open your message box. अपना message box सब लोग open कर लीजिए. And on the right hand side, I have mentioned today's agenda. Okay? What is the right approach? What is the right strategy? Okay? If you guys are unable to see that message, just let me know. I will show it. Okay, so let's start. The first question is, who should give UPSC CSC exams? मतलब किसको एग्जाम देना चाहिए? And now आप ये कहोगे कि ये कौन सा question है basically, but this is a question actually. Who should give UPSC CSC exam? The way Suresh has just told me that he has not prepared, fully fledgedly prepared, but he wants to give. My answer to him that no, he should not give that exam. But in other way, he suggested me that no, I wanted to see, I wanted to have that feel, I wanted to get that motivation. मुझे देखना है, मुझे बैठना है उस एग्जाम में. मुझे पता है मेरे पास 1-2 अटेम्प्ट हैं, लेकिन मुझे ये जानना है कि that how
How does it feel when you sit to give one of the prestigious exam of our nation? So, of course, who should give exam first? Anybody who has done minimum preparation of 1 year. When I say 1 year preparation, which means you have done with NCRT, you have done with GS papers, you have done with your optional, and you are slightly going gradually good in answer writing and essays. Okay? That is a 1 year total preparation. अगर आपको लगता है that I am not yet prepared or I have not completely read about it, please do not attempt it. The main agenda, the main point of today's session is do not go, with harsh preparation and make your expectation यहाँ पे. ठीक है? Fully prepare होके जाना with all the shastras in your arms. The shastras are like confidence, your attitude, your knowledge, your discipline. ये सारी चीजें आप लेके जाना. You will crack it. फोड़ के आओगे आप. That's my promise. Second question is, first question पे भी मैं आता हूँ. First question, anybody can answer that how many aspirants fill UPSC form every year? Anybody? Eleven lakhs. 10 lakhs, around 10 lakhs, yeah. Around 10 lakhs, of course, yes. And so, in this room today, where everybody is watching each other, आपकी लड़ाई ये जो 10 लाख है, 10 lakh is to 1 नहीं है. Understand me very clearly, okay? Just understand the point. 10 lakh is to 1. This is not. अगर कोई बोलेगा कि 10 लाख लोग हैं, तुम एक हो, तुम कैसे लड़ोगे? How will you challenge the world? ये बड़ी बड़ी बातें हैं. ये सारी बातें, ज्ञान की बातें थोड़ी अलग लेवल की हैं. Do not focus and deviate on these paths actually. 10 lakh out of 10, 5 lakh तो वो होते हैं जो सिर्फ उसको कोई शादी में अच्छा रिश्ता मिल जाए इसलिए वो फॉर्म भर देते हैं. कि आज तो मैंने मतलब लड़के ने यूपीएससी का फॉर्म भरा है एंड दहेज के बाजार में उसका रेट बढ़ जाता है. Understood. So there are so many not aspirant. I won't say aspirant. There are people. They play with their time and emotions. They only fill the form just to show. अरे आज तो मैंने फॉर्म भरा, यूपीएससी का फॉर्म भरा, पूरे गांव को बता देंगे, पूरे शहर को बता देंगे that मैंने यूपीएससी का फॉर्म भरा, भले कुछ हो चाहे ना हो. There are few aspirants, there are few people, they fill the form to go out, vacation पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं. Okay, so do not consider it. This is not 50%, around 4 lakh people they attempt prelims. सब काट पीट के around 4 lakh people prelims attempt करते हैं, जिसमें से I'm telling you honestly 1 lakh ऐसे students होते हैं, only 1 lakh जो serious aspirant, जो पढ़ाई करते हैं अच्छे से, all over India, including north, south, east, west. Only 1 lakh aspirant. And I'm telling you, you have got 20,000 seats available in prelims. Now, how does that sound? कैसा लग रहा है अभी? कि देखो prelims में हमें score तो करना नहीं है, prelims के marks तो add होते नहीं हैं, right? हमें top तो prelims करना नहीं है, हमें सिर्फ qualify करना है, right? We only have to qualify prelims. That's it. You don't have to score first rank, second rank, third rank in prelims. ऐसा तो कुछ है नहीं. तो आपको 20,000 seats हैं आपके पास, and you have to get it. अब आप खुद से पूछो, ask yourself that would you be able to crack prelims if I say that there is 20,000 seats? Yes, no, बताइए. You can write it as well. Yeah, of course. Everybody did say yes. So ये mindset होना चाहिए. Okay? Because 15 to 20,000 seats, 15 to 20,000 people get selected in mains, and then they give mains. Pre and then they give mains. Okay, so that's the mindset. And I trust you guys. अगर आप 8 महीने आराम से पढ़ लो, easily you will give, but you have to maintain
that discipline. Okay, so coming back to our second question, that what was my second part? How to start the preparation. So there are two things. There are couple. Actually, I don't know that how many of you have already been studying, or are you just a fresher, like Suresh? For example, Sachin. I spoke to him this afternoon. He's an experienced guy. He doesn't need, once again, reiterating. But I told him something. So there are so many strategies and all, but what the basic strategy, the standard which I wanted to present in front of you guys, and then you can modify as per your experience or knowledge के हिसाब से. ठीक है? Sir, can you please tell us about Sir, can you please tell us about your background so that we can ask domain specific questions? Like if I'm in engineering background, maybe so I'm comfortable like to ask you questions. Maybe I'm comfortable to ask you questions if you're too from engineering background. So No, for it I'm to not be, from engineering better. background. I'm from English. I mean, I've done English honors from Delhi University. So, anyways, irrespective of background, you ask me questions. Sir, so my specific question was, I'm an electrical engineering undergraduate from IIT Patna. I'm in my fourth year, and currently I'm preparing for campus placements, and companies are coming these days. It's a placement drive. So I studied for UPSC in my second year and third year, but for the fourth year I decided to like do coding and all to join a job first and then start my preparation. Sir, so like I'm in a dilemma, like should I continue preparation for UPSC, or like or should I focus for getting a job first and then like would you please throw some light on this? So, as far as I've understood, that you wanted to first understand that should you focus on getting a right job or prepare for UPSC, right? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Again, so everybody in this room, this is very great example. And Ashwani ने जो सवाल किया, जो क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही important है क्वेश्चन. So everybody, I think, just pay attention and इसको सुनना, समझना आप लोग भी. So Ashwani, what you want to do in life? It doesn't matter what your parents want. It doesn't matter what your brother, sister, girlfriend, wife, anybody, teacher wants. What do you want? Sir, I have always dreamed of UPSC from my childhood, not childhood, Right. majorly teenage days. But since like due to some financial conditions and like I belong to a lower middle class family, so I don't want to be a burden to my family too. So that's just the point. Like I'm passionate about UPSC, but for like for money or some monetary benefits, I want to How old are find you? a job. So. I'm 21 years old. I'm 21 years So, old. thank you so much for sharing your personal information here, which will be a case study actually for everybody. Thank you so much, Ashwani. Great. So, it's very, very important, my dear friends here, to know who are we. हम कौन हैं? जब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि मैं कौन हूँ, उसका मतलब क्या है? Anybody? किसी को आइडिया है? अगर मैं, if I'm asking you guys, मैं कौन हूँ? अगर आप अपने आप से पूछोगे, who am I? Who you are? उसका मतलब क्या है? Human, sir. अरे human तो हैं. Okay, so aspirant, yeah. So first of all, Ashwani and others, we have to understand that what is our strength and weaknesses. ठीक है? We have to understand कि what is our capacity actually. Okay, 3 things in life. ये चीज note करके रख लो. Very, very important. And 3 things is very important. First is know yourself. What you want. Know yourself. What you want in life. And when I'm saying what you want in life, that doesn't mean you earn a lot of money. You want a Mercedes car or nothing as such. What do you want in life actually? ये एक सवाल है जो अगर आप अपने आप से पूछोगे, अभी मत, आप आराम से पूछना, that what do you want in your life? Do you have a vision? अगर आपके पास छोटा मोटा गोल नहीं है, no problem.
जैसा आपने कहा, you wanted to become an IAS officer, IPS officer, or IFS, or any other services. If you have a vision and that is yourself, वो किसी ने आपके दिमाग में नहीं डाला है, if this is your vision, then you can do it in your career. अगर आपके पास vision नहीं है, अगर आपके पास goal नहीं है, then you will not be able to do anything. अगर आप बहुत लोग हैं, they are working professional. I was a working professional, and there are a couple of, even Sachin, he's a working professional. So many toppers, they were working professional, but time they manage. They are very, very, very well great with the management of their time. पैसा भी कमाना है, माँ बाप को ज़रूरतें भी पूरी करनी है, घर भी चलाना है, लेकिन पढ़ाई भी करनी है. I'll give you one example of an IS officer, Anu ma'am. Anu ma'am, she got married and she stayed almost 1 year from her child, and that child was almost 2 to 3 year old. छोटा बच्चा था. 1 साल अपने बच्चे से, माँ अपने बच्चे से कैसे अलग रह सकती है, वो शायद हम में से हम शायद अपनी माँ से अगर कनेक्ट रहेंगे तो हम पूछ सकते हैं. It was very, very difficult. Not only for working professionals, but for women's, for working for homemakers. It's very difficult. So, what I'm saying, that build your absolute aim. अर्जुन की तरह एकदम ऐसे निशाना साधो, सिर्फ आपको मछली की आंख ही दिखनी चाहिए और भी कुछ दिखना ही नहीं चाहिए. और जितने भी पांडवास थे वहां पे, और कौरवास भी थे महाभारत में, जब वो द्रोणाचार्य में के कैंप में गए थे, अर्जुन को सिर्फ वो आंख दिखी थी. और आपने ऑफ कोर्स ये सारे एग्जांपल सुने होंगे, लेकिन दिस इज द राइट मोमेंट टू टेल यू गाइस, एक लक्ष्य बनाओ, 2 लक्ष्य नहीं. हाँ, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ करो. और मेरे कहने का मतलब ये है, अश्वनी, सुरेश, सचिन एंड एवरीबॉडी, दैट बड़ी जंग जीतने के लिए छोटी छोटी जंग हारनी पड़ती है मेरे दोस्त. मतलब बड़ा जंग है यूपीएससी, छोटा जंग है ये जॉब जो आप कर रहे हो जिसमें आपका मन नहीं लग रहा है. दिस इज टेम्पररी, दिस इज टेम्पररी, यू विल पास इट. कहते हैं कि जितना बड़ा चैलेंज होगा उतना ही बड़ा सक्सेस होगा और उतना ही अच्छा सुकून मिलेगा. चैलेंज बहुत बड़ा है, यूपीएससी है, पूरा 1 साल लेता है. द एंटायर एग्जाम टेक्स 1 year, द ब्लडी 1 year. Okay, and then after selection it takes another 1 year, 2 years. You have to understand the importance of time in our life. तो make one your absolute aim. मुझे बनना है तो बनना है. और कहते हैं ना कि हाँ वही कि वही बड़ी जंग जीतने के चक्कर में आपको छोटी छोटी जंगें हारने पड़ती है. हाँ, अगर किसी ने आपको डांट दिया, किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी, किसी ने आपको मना कर दिया, किसी ने आपको डिमोटिवेट कर दिया, then what hell? Let them. Second, control yourself. अगर मैं आपको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, सुरेश अगर सचिन को यहाँ पे कुछ बुरा बोलता है, सुरेश यहाँ सचिन को कुछ उल्टा सीधा बोल देता है, कुछ जो सचिन को नहीं अच्छा लगता, और सुरेश यही चाहता है कि मैं बोलूंगा कि सचिन भड़के, दैट ही विल गेट एजिटेटेड एंड ही विल स्पीक व्हाट आई वांटेड एक्चुअली. कंट्रोल. वेलकम मूवी देखी है ना, कंट्रोल उदय, कंट्रोल. सचिन हैज टू कंट्रोल. सचिन विल नोट इट डाउन. सुरेश, मैंने लिख लिया, बाद में हिसाब करूंगा. अगेन सुरेश गालियां दे रहा है, उसको ढेर सारी चीजें बोल रहा है, abusing him and so many, but Sachin is like calm, patient. He's saying, Suresh, I have noted down, मैं तेरे को बाद में देखूंगा. अभी I am going to watch movie, अभी I am going to eat dinner. You get the hell out of here. Control. Have control in your life, emotion. और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यूपीएससी का एग्जाम सिर्फ किताब तक सीमित नहीं है. बुक इज वन पार्ट. बुक इज जस्ट वन पार्ट. आप पूरे के पूरे इंसान बन जाते हो. मतलब एक कहते हैं ना कि एक क्या प्रोडक्ट निकला है वहां से. You learn so many lessons in your life. You can watch any interview of any aspirant, any civil servant who is now an IAS, IPS or other services. उनके बात करने का, बोलने का नजरिया देखो, तरीका देखो, और फिर ये देखो कि जब वो एस्पिरेंट थे तो कैसे बात करते थे.
the day you think of becoming an IAS or other officer, the day your journey starts. That day itself, you are in the path of getting yourself transformation. एक डिसिप्लिन हो जाता है, पंक्चुअलिटी आती है, लाइफ जिंदगी का एक नजरिया बदल जाता है. जब आप पढ़ते हो, इतनी ढेर सारी चीजें पढ़ते हो, आप जॉन स्टुअर्ट मिल को पढ़ते हो पॉलिटिकल साइंस में, मार्क्स को पढ़ते हो, आप रूसो को पढ़ते हो, कांट को पढ़ते हो. When you read these philosophies, you will be like, मैं कहाँ था अभी तक, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा था. It's like, wow, they have mentioned it, they have given it very, 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 very exemplary, I mean, exceptionally very well example. When you read about polity, जब आप polity पढ़ोगे लगता है अरे मुझे पता क्यों नहीं था. There are so many things in polity that we don't know around here. क्या कैसे system कैसे चलता है, देश कैसे चलता है. And first of all, also I would also like to first of all that appreciate you guys कि आपने, वो कहते हैं ना कि आपने हिम्मत की इस एग्जाम को देने की. बहुत लोग के बस की बात नहीं है. आई एम टेलिंग यू गाइज, बहुत लोग के बस, नॉट एवरीबडी कैन गिव दिस एग्जाम. बहुत लोग के बस की बात नहीं है. उनकी हवा टाइट हो जाती है कि अरे नहीं, अरे अरे कौन देगा, अरे. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई, अगर ये वीडियो कॉन्फ्रेंस जब खत्म होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रिशिएट योरसेल्फ. अपने बैक पे एक ऐसे से पैट ऑन द बैक देना कि मैं कर रहा हूं तैयारी, क्योंकि मैं देश की सेवा करूंगा, मैं लोगों की सेवा करूंगा. So, answer to Ashwani's question once again, that focus on your absolute aim, have control, have discipline, make a plan, make a strategy. करो ना यार, तुम जॉब करो, तुम माँ बाप की सेवा करो, तुम क्या हो गया अगर एक दिन नहीं पढ़े तो, ठीक है, यू आर सैक्रिफाइसिंग ना. जिसका जितना बड़ा बलिदान उतना ही बड़ा उसको मिलेगी सफलता. और जो एक और चीज याद रखना, अगर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, everybody, I think from top to bottom we have got 25 6 members in our 28 members in our group. एक बात हमेशा याद रखना, I will speak in both language, Hindi and English. Please make a note down, I mean please make this note that there are two things when it comes to UPSC. First, अगर आपको अपने इंटरेस्ट से प्यार है, अगर आपको अपने इंटरेस्ट से प्यार है और आप कह रहे हो कि नहीं मुझे अपने इंटरेस्ट से मैं कमी नहीं करूंगा, लेकिन भले सफलता मुझे मिले चाहे ना मिले, which means that I will stick to my interest, I will not give preference to success. Whatever is my interest, I will work for it towards this examination. Second, आपको सक्सेस होने के लिए चाहे जो कुछ भी हो आपको करना पड़े, चाहे इंटरेस्ट नहीं है उसको इंटरेस्ट बनाना पड़े, यू हैव टू डू इट. कहने का मतलब यही है कि इन दिस जर्नी देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल, दैट इज नॉट योर इंटरेस्ट, दैट इज नॉट योर टाइप, दैट इज नॉट योर मेथड, दैट इज नॉट योर फिलोसफी. बट सक्सेस तो चाहिए ना यार, सक्सेस तो चाहिए, आईएएस तो बनना है, तो यू हैव टू डू इट. मुझे सुबह नहीं उठा जाता, आई एम अनेबल टू वेक इन द मॉर्निंग एट 5 AM, और मे बी आई कैन नॉट वेक टिल 4 AM. रात में नहीं पढ़ सकता, सुबह नहीं पढ़ सकता. अरे यू हैव टू डू इट. नेक्स्ट वी विल कम अप विथ our third agenda, that yeah, this is very important. So how many of you are giving 2022 prelims? एक बार लिख दो यहाँ पे ग्रुप मैसेज, yes no करके. So I'll give you one very important tricks and tips. 2022 I'm talking about, or maybe 23 as well. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, almost कार्तिक 24 में. yes, ठीक है, great. Right, 23, 22, 3, 4, okay. Preparing for 22. चलो, basically यहाँ पे 22 के ज़्यादा हैं aspirants. I'll give you small technique, इसको लिख लेना आप, and
this is a strategy, a technique. First, let me go into facts. Okay? Being an aspirant, never ever believe things without fact, things without tathya and tark, things without evidence. Ask 1,000 questions. अगर आपसे कोई बोल रहा है कि महात्मा गांधी ने कुछ किया ही नहीं हमारे देश के लिए, तो उससे पूछो क्यों, आपको क्या लगता है, क्या क्या नहीं किया, बताइए. Ask him. Ask 1,000 questions. There are so many people, they used to abuse, they used to say that बापू ये हैं, बापू वो हैं, गांधी जी वो हैं, गांधी जी ये हैं, ये फलान ठिकान, right? Ask them, why are you saying it? Just naturally. Okay, so ask questions. Let us go. Those who are attempting prelims in 2022, make a note here that what should be the score you should aim to crack prelims, and then what will be the areas where you can focus to crack prelims. First, what should be the aim? Anybody? किसी को पता है that what was the general cutoff for 2022 जो अभी result आया है UPSC का 3 days back? What was the cutoff for general candidates? एक second. I think 96 है, if I'm not wrong. 96 है, okay? 96 was general, yeah. Thank you. नाम भी ऐसा है कि मैं क्या बोलूं, Dark Sun. Thank you. So yes, 96 is the cutoff. Now let us do the mathematics. We all have to attempt CSAT papers, right? वो second paper देना है, and that paper will have analysis, reasoning, mathematics, right? Last year 46% था. 46% था मतलब 46% मैं समझा नहीं. 46% ऐसा. Student passed out. Acha, okay. So yeah, which means if you have to correct, if you have to get 96 marks, then how many questions you have to attempt? Just do the simple maths and tell me. Each question has 2 marks. Then how many questions you have to do, then you will get 96. 46? 50 मान लो, let's say 50. Let's say 50, and you have got 100 questions. अब एक मुझे बात बताओ आप, this is the 50, okay? Half, 50% of the question should be right? I think last year was 106, मुझे याद नहीं है, literally, और 18, 17, the average एक होता है, this because last year's paper was little bit, it's different, the pattern got changed, but almost 105 आप मान के चलो, that 105 should be your target. 105 तो करना ही करना है, या फिर आप 110 मान लो, okay? Yeah, of course, 55 to 60 is the safer side. So let us calculate. So you guys do the calculate. I am just talking here, and you do the calculate here. Out of 100 question, if you're going to attempt each question, then it will take 1.2 minutes, right? What if you prepare that way that no, I'm going to only attempt 80 questions. 80 means you will have 1.5 minutes on every question, right? You have got 1.5 minute, 1.5 minute is good time. Now out of that 80 question, you ensure that at least 56 questions sahi hone chahiye. Okay? And 56 questions sahi means how much left from 80? I think 24 questions. Right? Out of that 24, now you will say, sir, I think अब मुझे use करना पड़ेगा, तुक्का लगाना पड़ेगा, तिगड़म use करना पड़ेगा. Then I will play blank, I will play blind, ऐसे ऐसे करके students, they used to tell me. And in fact, I'll tell you one thing.
just note it down. This 56 mark, 56 questions you have to do right. इसको note कर लो आप, ठीक है? Second, let us come on the 24 part. So 56 plus 24 is 80. Okay. In that 24, let us talk about जिसको हम तुक्का कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड से इसको लगाया है. So, what is your experience? तुक्का लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? तुक्का नहीं लगाना चाहिए 50-50? Yes, लगाना चाहिए, right? Yes, intelligent one, right? If I were you, then definitely calculated risk. I love that word. Calculated risk is very, very impressive. I mean, यही एक word है. So what does that calculated risk means? Calculated risk का मतलब ये है कि you have, it's like कुछ भी नहीं आता. अगर कुछ भी नहीं आता तो मत लगाओ. Literally, I'm talking about those people that if they are confused, नहीं option 1 है, नहीं 2 है, नहीं 1-2 है, नहीं गलत है, उस सिचुएशन में, ओके? तुक्का मीन्स कि आप आंख बंद करके ऐसे लगा रहे हो, ऐसे बिल्कुल नहीं. तुक्का डजंट एक्चुअली, तुक्का वर्ड गलत हो गया. लेट्स से इंट्यूशन, जो आपके अंदर की एक भावना होती है, सबकॉन्शियस माइंड कहता है यही सही है, मैंने ये पढ़ा है एंड यही सही है. ओके, अगेन once again I'm saying that 56 question you have done right. 24 out of that 24 question you have to use your smart tricks, you have to use your subconscious mind कि मैंने कहीं तो देखा है क्वेश्चन. ओके, चलो ठीक है, आते हैं 4. लेट्स से you attempt 4 question. Okay, I'm talking about intuition, tukka. Okay, you attempt 4 question. What does the law of probability says? लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी यही कहती है. ऑफ कोर्स 4 में से एक तो सही होगा ही होगा. ओके, दिस आई एम मेकिंग सेंस हियर बिकॉज मैं पढ़ के गया हूं, मैं रिवाइज करके गया हूं, मैं बहुत मेहनत करके गया हूं. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट इन दैट सेंस. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट एनीबडी हु वेक्स अप एंड जस्ट रियलाइज ओके टुडे आई हैव माय एग्जाम एंड देन आई विल गो एंड ब्लाइंडली ही, उसके लिए नहीं कह रहा हूं मैं. ओके, so as Sachin and Ashwani has said, 25% is the chance out of 4 questions you will get correct. अब ये सोचो, एक नेगेटिव मार्किंग पे कितने माइनस होते हैं? 0.33. Let us say out of 4 question you attempted 3 wrong. एक तुक्का सही निकल गया, एक इंट्यूशन आपका सही निकल गया. तो आप बताओ कि वो इज इट प्लस और माइनस इन टोटल? 1 राइट यू गेट 2 मार्क्स, 3 रॉन्ग minus 1.5, 1.2 actually, but you gain 0.8 marks or 0.6 marks, isn't it? Plus 7, right? Plus 0.75, I'm sorry. You understand what I'm saying? You're getting there, right? So let us say if somebody out of that 4 question, if somebody does 2 right, उसको लगा कि यही सही है, मुझे लगता है यही सही है because I have seen somewhere, read somewhere, यही सही है. 4 में से 2 सही हो गया. Now tell me guys, आप कैलकुलेट करके बताइए फिर कितना होगा? 1.1 plus 1.4. और फिर ये तो बहुत लक की, किस्मत की अगर बात हो जाएगी, चारों के चारों सही निकल गया तो फिर मतलब बल्ले बल्ले. So it's very important for me here on this platform to realize you guys that go smart. I mean you have to take calculated risk. ठीक है, हम छोटे बच्चे नहीं हैं, हम अब क्लास 12th में नहीं हैं. ओके, वी आर ग्रोन अप, वी आर इन ग्रेजुएशन. इफ यू हैव पास ग्रेजुएशन वी हैव टू डू कैलकुलेशन. बिना कैलकुलेशन के हम जाएंगे नहीं. हम ये सेट कर लेंगे कि मुझे कितना दौड़ना है. यू नो अबाउट उशैन बोल्ट, राइट? जमाइकन रनर उशैन बोल्ट. ना मत कहना,
बेइज्जती हो जाएगी. Yes, the fastest runner. Right. Very good. Usain Bolt is also known for his calculated risk. अरे वो आदमी कैलकुलेट करता था. कैसे 100 मीटर रेस में he has set world records, man. I believe, I don't know when that record will break, but he has set world record 1000. I mean इतना पैसा उसके पास और इतना टैलेंट है, मतलब I have no words to say actually, but he had that calculated risk method. उसको लगता था कि अगर मैं 10 सेकंड तक इतने टाइम तक दौड़ूंगा, इतना फास्ट दौड़ूंगा, फिर कितने समय में मैं I will finish that race. And my dear friends, ladies and gentlemen, Usain Bolt सिर्फ 9 सेकंड में, I don't know क्या रिकॉर्ड था उसका, 8 पॉइंट समथिंग था, ये समथिंग कुछ था. 9 seconds is very, very important. Even 9 seconds is very, very important. And see that where this person is in his life. सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा है वो, बहुत रेस्पेक्ट है उसकी, बहुत रेस्पेक्ट है उसकी. Nike, we all know shoes, Nike signed 1000 crore deal with Usain Bolt. 1000 करोड़ सिर्फ 9 सेकंड दौड़ने के लिए. I mean, crazy. When the lawyer from the side of Nike's side, he asked Usain Bolt's lawyer, Usain Bolt's legal representative, कि why the hell we are paying 1000 crore rupees to this gentleman just because he ran 9 seconds? उसने ये जवाब दिया कि देखो मेरे दोस्त, it's not about the 9 seconds. You are paying him because of he has given his blood, sweat, that 1000 hours he has spent day and night in that field. You are paying him for that. You're not paying him for the 9 seconds. Okay, so calculated risk is very, very important. Once again, किसने लिखा था यहाँ पे? How much marks you will gain? Yes. So, ये सोच के जाओ कि मुझे इतना अटेम्प्ट करना है, मुझे इतना कंफर्म करना ही करना है. ये हो गया. Okay, now let us come on the second part, which area you should cover actually. So you can pull out your pen and paper. The most important, which everybody gets stuck actually, and the majority of the questions it asks from prelims exam is from current affairs. Okay, so we have seen that trend. So you make a note. Okay, somebody just write it, that current affairs, this marks. I will tell you. वैसे आप एक बार बना लेना और फिर बताना मुझे. ओके, सो करंट अफेयर्स ऑन एन एवरेज आउट ऑफ 100 यू गेट 30-35 क्वेश्चंस. ओके, इन वर्स्ट केस 25 आ सकते हैं, बट द ट्रेंड सेज ऑलमोस्ट 30-35. ओके, नेक्स्ट इज environment and ecology. Why environment and ecology? बताओ. Because there are aspirants which are, I mean, they are appearing for forest services. Forest services का एग्जाम अलग से नहीं होता है. Okay, the aspirants, they are from they wanted to be an IFS officer, forest services. So due to forest services as well, the weightage of environment and ecology and geography, the third point is geography, it gets increased. Okay, so current affairs, and see, this is a standard which I am telling you guys. You can, and this is not a sacrosanct, ये जो मैं बता दे रहा हूँ वही नहीं होगा, अपना भी एनालिसिस करना, ठीक है. लेकिन मैं आपको एक, आई एम जस्ट गिविंग यू गाइज एन ओवरव्यू. ओके, दिस इज हाउ यू शुड थिंक. Yeah, just because forest services office aspirants, they wanted to give exam, so that is included in that prelims exam. That's why the weightage of questions from environment, ecology and geography, it gets increases. Okay, 3 लिख लिया. And then fourth पे आता है history and culture, मतलब history/art and culture, you can write it. Okay, you can say 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड. उसके नीचे आप लिखो
this polity, governance and all. Polity, governance, ये सब आप लिखिए. Okay. अब क्या बचता है? Anybody? कोई बताएगा मुझे क्या बचता है? Which subject? Economics, sir. Science Economics, and sir. technology. Science Right. and technology. Social Right. issues, sir. General science. So- General science. Right. Social issues. उसके नीचे आप लिखो इकोनॉमिक्स / साइंस एंड टेक. आई एग्री दैट फ्यू विल हैव ऑब्जेक्शन. नहीं सर, वो इकोनॉमिक सर्वे से और बजट सर्वे से बहुत आता है, बहुत क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चंस आते हैं, बहुत नहीं आते हैं. ओके, दे आर वेरी लिमिटेड एंड वेरी प्रिसाइज, वेरी गुड क्वेश्चन. द क्वेश्चन दैट यू कैन इजिली अटेम्प्ट, बट बहुत कंफ्यूजन होती है उसमें. With economics, always check with facts. Facts means numbers. Okay. So you consider आपने वो लिस्ट बना लिया and / social science / वो सब करके लास्ट वाले में सब आप लिख लो. Now tell me if anybody should you have made this chart. Now tell me if you need to get at least 56 right, then which all area you can focus. I mean, that's depend upon you. Current affairs is the major part. वो तो करना ही करना है. Of course, you have to do it. Environment and ecology, second. Environment and ecology, second, sir. Yeah, here you go. I mean, if you are comfortable with environment ecology, you go. Next to polity. Yeah. Next to polity. Agriculture, I think. history, and art and Right. culture. So, I mean, you can calculate yourself that how feasible would be for you actually. ठीक है. अगर एक मुझे बात बताओ that let's say this guy Govind is giving this paper, और Govind, he is so damn sure and he has read current affairs thoroughly. He knows tips on tips everything, but he did not touch science and tech. He did not touch social issues. He did not touch economy. Okay, but he has read current affairs, polity, and geography and this ecology. ठीक है. हिस्ट्री भी नहीं पढ़ा है वो. हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर भी नहीं पढ़ा है. बस ऊपर के 3-4 सब्जेक्ट वो पढ़ लिया है. और ही सेड कि आई एम कॉन्फिडेंट सर, कहीं से भी आप पूछ लो, एमसीक्यू ही तो है, आई कैन रिकॉल. You, I would say, if you are disciplined enough, if you are honest and you are working hard and you understand the tips and tricks of UPSC prelims, nobody will stop you actually to crack prelims. I'm telling you guys. Okay, so these are some analysis. These are few insights which I'm giving you. You won't find at much places primarily. Maybe you can find it, but it's very, very important to inculcate in our life. वो हमें अंदर अपने अंदर पीना पड़ेगा. समझ रहे हो आप? So this is very important. That's how I covered point 3. What score should I aim? Which segment and what should I target actually? I hope things are getting clear slowly and eventually. And also, meanwhile, I wanted to tell you all that just for 2022 and 2023, I have requested Habitat, the platform through which we are connected. I have requested Habitat that I wanted to guide these students, these aspirants, and get me some membership. So it's very, very minimal amount, 200 rupees. 200 रुपए का पिज्जा खा जाते हो मार्केट में, तो एक टाइम पिज्जा मत खाना, मेंबरशिप ले लो और गाइडेंस ठीक ठाक मिलेगी. एटलीस्ट आप भटकोगे नहीं और यू विल हैव अ गाइडेड मेंटर. इफ यू लाइक द सेशन, इफ यू थिंक दैट नो, बंदे में कुछ बात है यार, सर में तो कुछ है, मतलब हो जाएगा, कोशिश करूंगा. ओके, नेक्स्ट अप, sources. This is also very, very important. Sources, what to read, what not to read. क्या पढ़ें? कभी let's say दिव्या ने बोल दिया कि I think गोविंद you should read this book. गोविंद ने कहा कि अच्छा ठीक है वही पढ़ता हूँ, छोड़ दो सर.
सुरेश ने बोला सचिन को कि सुरेश सचिन यू मस्ट रीड मैन दिस बुक फॉर पॉलिटिक्स वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सचिन कह रहा ठीक है यार ले आ, फिर आई विल ऑल्सो प्रिपेयर एंड वील प्रिपेयर टुगेदर। नो प्लीज, ये वाला जो है ना दोस्ती बाद में कर लेना किताबों के साथ, ये बाद में करना, ओके? आप अपने लिए पढ़ाई कीजिए और दिस इज माय रिक्वेस्ट कि आप दूसरों के बालकनी में झांकिए मत। उसको अगर एडवाइस देनी है तो सही एडवाइस दीजिए। सही एडवाइस मीन्स यू गिव इंस्पिरेशन, यू गिव मोटिवेशन टू देम। बट आपको जो चीज अच्छी लगी हो वो जरूरी तो नहीं सचिन को अच्छी लगे, या फिर जरूरी तो नहीं दिव्या को या प्रवीण को या एनीबडी एल्स इन दिस रूम अच्छी लगे, राइट? आई डोंट लाइक पिज्जा, मुझे नहीं अच्छा लगता। और somebody is like आज तो मैं चीज पिज्जा ऑर्डर करूंगा डोमिनोज से, आज तो मतलब पार्टी है भाई। तो इट मैटर्स। सो सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इनफैक्ट वो मेंबरशिप वाले प्रोग्राम में इन दैट सेशन आई विल ऑल्सो गाइड यू ऑल कि भाई इनफैक्ट इफ यू वांटेड टू बाय सोर्सेज, बाय बुक्स, विच इज द राइट प्लेटफॉर्म, कौन सी दुकान होगी उस या कौन सा वेबसाइट होगा, कौन सी इंस्टीट्यूट होगी, यू गो एंड बाय, कौन सा मॉक सीरीज, कौन सा टेस्ट लो आप, ये आप ले सकते हो। एटलीस्ट इतना तो मैं बता सकता हूँ क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस है इस मामले में अभी, ओके? सो सोर्सेज फर्स्ट, स्टार्ट विथ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज द गीता एक्चुअली फॉर योर यूपीएससी बेस। बेस है वो पूरा, इस पे खड़ा है पूरा आपका फाउंडेशन एनसीईआरटी। If you have not gone through NCERT, God will help you. मैं भी नहीं बचा सकता। And I am telling you, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं NCERT से, और हल्के में मत लेना। हम लोग स्कूल में बहुत मजे में लेके NCERT को पास हो गए। We wrote some nonsense पेपर में, टीचर करेक्ट करके हमको दे दिया, 20 में से 15 दे दिया, and we enjoyed। हमने फिर कोका कोला पिया, मैं पास हो गया टेस्ट में एंड ऑल। इतना इजी नहीं, सीआरटी को हल्के में मत लेना। इट्स वेरी जेन्युइन बुक, इट्स एन ऑथेंटिक क्रिएशन एक्चुअली। फाउंडेशन है वो यूपीएससी का, उसको पढ़िए प्लीज। ज्योग्राफी को क्लास 6 से क्लास 12 तक पढ़िए, पॉलिटी को 9 से 12 तक पढ़िए, इकोनॉमिक्स को 9 से 12 तक पढ़िए। सोशल इश्यूज, अगर इफ एनीबडी wants to have sociology in their optional subject, optional की बात हम करेंगे अभी, if sociology in their optional subject, so you can study sociology of class 11th। मेरा कहने का ये मतलब है कि please do not leave NCERT। there are direct questions in mains, direct questions in prelims, okay? और खास तौर की when I'm sure I think दिव्या आपने पढ़ा है, right? Of course I know that you have read NCERT। You remember उसमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं that रामू की स्टोरी है, श्याम की स्टोरी है, एक पूरी पैराग्राफ है, right? वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। That is not a joke they have written in the book that Ramu used to earn 5,000 rupees, but at the end of the day, Ramu got nothing, but he has to feed his family, he has got social issues, he has got illness and all, then how could Ramu survive? Do not take that lightly. ये एक case study है for studying the economics, studying the social issues. Why was Ramu put in that situation? Or maybe let me change that name Ramu. Let me take that name from some popular actor. सलमान भाई की क्यों सिचुएशन ऐसी है, शाहरुख की क्यों सिचुएशन ऐसी है, शाहरुख, you understand what I'm saying? So that image, वो that is very important, that is a case study guys, उसको पढ़ना जरूर, take a reference, okay? Even for geography, maps are very important. You get direct question from maps, okay? क्या नाम था यार, सिद्धार्थ, या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बुक फ्रॉम के सिद्धार्था, मेरे नाम पे ही है के सिद्धार्था, मेरी बुक नहीं है, ओके? इस के सिद्धार्था की बुक है वो,
उस पर आप प्लीज जाओ और मैप्स नेशनल इंटरनेशनल जो बाउंड्रीज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया श्रीलंका के बीच में वो कौन सा स्ट्रेट है, या फिर मैकमोहन लाइन कहाँ से गई है, डूरान लाइन कहाँ से गई है, मैक्सिको और यूएस और मैक्सिको के बीच में कौन सा छोटा सा वो सिटी है। सो मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ sources. So, aspirants who are beginners, I would request you guys to please build your foundation with NCERT. Then, step 1 NCERT hai. Step 2 is reference book. Level 1 NCERT. Level 2 your reference book. When I say reference book, which means you take reference from Polity Lakshmikant. Lakshmikant को घोल के पी जाओ. पी जाओ मतलब अच्छा, if I would say that read 15 times, practically 15 times Lakshmikant, do you think that it's a huge number? 15 times I'm talking about. This book size. 15 times. I am not joking, actually. Why I'm saying 15 times? If you're not able to understand in 10 times, in 12th time, you have to understand it. You have to read the concepts. It's very, very important concept है यार उसमें. Okay, if you've got that skill, you've got in that intelligence level that you could figure it out in 2 or 3 reading, fantastic. Otherwise, करना ही करना है लक्ष्मीकांत को. Second, फिर आपके इकोनॉमिक्स के लिए नितिन सिंघानिया हो गए. इनकी बुक ले लीजिए आप. He's also an IAS officer. He's serving in currently Calcutta में he's I think secretary at the secretary level. नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ सकते हो आप. Sir, for geography 11-12 NCERT plus GC Leong physical geography plus Majid Hussain for Indian and world geography enough? Perfect. Yeah, this is enough. I would say कि एक बार अगर if you have that concepts clear, then move forward with this situation. If not, then वो एक बार देख लेना क्लास 6 से भी एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, सॉइल क्या होता है, कितने टाइप की सॉइल होती हैं. अगर वो वाला कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है तो एक बार चेक कर लेना आप, ठीक है. अदरवाइज इफ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस लेवल, आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो. अभी से मतलब मेरे सेशन के बाद. सर हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी? ओल्ड एनसीईआरटी. सर हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी? आई मीन यू गो एंड एनसीईआरटी की वेबसाइट पे यू गो, ओके, एंड जस्ट डाउनलोड इट फ्रॉम देयर. You've got history, contemporary history and all. एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो मैं पढ़ा करता था, MC Majumdar. There are 3 writers. I'll give you a reference. MC Majumdar. You've got this book. इतना लंबा चौड़ा बुक है. It has got ancient history, medieval history, modern history and world history. सब कुछ एक में ही है. बहुत अच्छी बुक है. You search on Amazon, MC Majumdar history book. वो आ जाएगा, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है. क्योंकि बिकॉज आई एम प्राइमरली एन एडुकेटर ऑफ पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल इश्यूज एंड सोशल जस्टिस एंड सोशियोलॉजी. I teach optional sociology optional to students, and other than that, and polity, governance, and social issues, social justice. Yeah, I am that educator of. I am not an educator of history, geography, or rest of the subjects. Okay, I am telling you guys very, very honest. It is compulsory to. It is Mohini. Yes. It's not compulsory. It is the only option. सुरेश, you're optional. अरे क्या बात. ये तो वही बात हो गई जब मिल बैठेंगे आप, मैं और. Very good. So join me on that space. Get that membership. So we'll do it. Sir, for art and culture. 1 second. Sir, for art and culture, fine arts with Nitin Singhania, sir, notes and हाँ, yes. Even for art and culture, because Nitin Singhania, he wrote 2 books on economy and on art and culture. ले सकते हो आप. It's good. बहुत ही अच्छा describe किया है उन्होंने. What about anthropology? I mean, you're asking about for optional के लिए. अरे वाह, रोहताश विमल, हिंदी लिटरेचर. रोहताश, हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल. आई वुड सजेस्ट यू डू नॉट लीव. इसको दो. आई विल टेल यू, यूपीएससी का जो अभी एग्जाम हुआ है, आउट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स
those got selected. 736 selection हुई है, if I'm not wrong. You won't believe, only 13 people they took Hindi as their optional. हिंदी तो लेना, हिंदी is language यार, of course लेनी चाहिए. And Rotash, I am telling you now that should you prepare solely and with dedication, with passion, this Hindi literature, optional में आराम से 300 के ऊपर नंबर आपका, अगर अच्छे से पढ़ोगे सब कुछ डिटेल मन से लगा के पूरे पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, 300 से नीचे नंबर आपके नहीं आएंगे. आई गारंटी यू. जिस तरीके से आप कोशिश कर सकते हो, बहुत चांस है, बहुत स्कोप है लिटरेचर का. इवन इफ समबडी हियर वांट्स टू डू इंग्लिश एज एन लिटरेचर, फॉर एग्जांपल भाग्य लक्ष्मी, you have that scope. It's a very good subject for optional. Why very good? Because you feel that you can do it. That is why it's very good. I am coming optional पे अभी हम आते हैं, okay? Because optional is another is a different discussion primarily. Let me come back to here this point. हाँ देखो, 1 year plan. So sources and what not to study, that is clear, almost equal. And 1 year plan. So what was 1 year plan? ठीक है, लोग 5 year plan निकालते हैं, हमारा 1 year plan है, हमारा 1 year plan ही रहेगा. ठीक है, 1 year plan ये है. So let's say they have many students, they wanted to appear for 2022. आज से क्या strategy रहेगी? Okay, for the next 2 months, I am saying once again, for the next 2 months, those who have not touched NCERT, ऐसे करके NCERT पूरा पढ़. I mean, do not deviate yourself here and there. Do not read newspaper. Do not get into the advice of any XYZ person. Get your 2 months dedicated to NCERT along with your optional. If you think that you go, I mean, once you clear prelims, then you will prepare for mains and optional, then you are at the wrong place. सब तैयारी शुरुआत से ही लेके चलनी पड़ती है. Okay. So 1 year plan for where we for sir, yes, I'm English teacher, very good. Yeah, Bhagya Lakshmi. Political. Okay, you can also connect with me, Bhagya Lakshmi. I'll let you know. Good mentor for English optional. Sachin, political optional. Political optional means Sachin what? I mean PSIR or only public administration? ये भी हम बात करेंगे. Okay, आप लोग मैसेज लिख दो. So what was my question? अभी मैं क्या कह रहा था? Yeah, with reference to 1 year plan. First, NCERT. Second, उसके बाद फिर हम, I mean, first में 75% हम देंगे NCERT को, 25% देंगे हम optional को. When you go in 3rd month, let's say October and November, you have given your time to NCERT, 75% and 25% is optional. Okay, you dedicate 2 hours in optional and then you dedicate 3 to 4 hours in NCERT. After 2 months, switch it. You give your 75% to your optional in December month and then the 25% to the static portion. When I say static portion, you cover the revise what you have written, NCERT वगैरह, and then static portion में आ जाएगा आपका history and arts and culture and all. Reference book उठा लो आप. Okay? And from January, in May, in February, pick ethics. Ethics का subject उठाओ आप. Ethics शुरुआत में मत उठाना. Do not work on your GS4 paper from the beginning itself. No, never. January में या February में आप ethics उठाओ based on your पढ़ाई. Then read about the ethics. थोड़ा सा answer writing practice करो. Okay? And अब आपका आता है March, April, May. Because we all know UPSC 2022 कौन से date को है, right? June? Fifth June, yes. So I've sent my contact number here. You are requested to please WhatsApp me, Telegram me. Please do not call me after 12 PM. रात में मत call करना.
रात में सोते हैं आराम से, आप भी सो, ठीक है? Please call me here and then we will discuss more. Now, let's talk about last but not the least point is, and what's very, 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 very important, how to choose your optional. कैसे चूज करेंगे ऑप्शनल, बताइए। जो अच्छा मार्क्स होना चाहिए सर मेरे लिए। अच्छा मार्क्स Interest भी होना, जो इंटरेस्ट अच्छा होना मार्क्स चाहिए, होना अच्छा मार्क्स चाहिए होना चाहिए, सर और मेरे लिए। एनीबडी तो एल्स? इंटरेस्ट भी होना चाहिए। सोर्सेस भी अवेलेबल होना चाहिए। सोर्सेज भी अवेलेबल होना चाहिए, और सोर्सेस डिमांड भी है सुरेश अवेलेबल की, होना बहुत डिमांड चाहिए। है। अच्छा। सुरेश को मतलब जीवन साथी भी ऐसी चाहिए जो खाना भी बना ले, काम भी कर ले, और माँ बाप की सेवा भी कर ले, और बच्चों को पढ़ा भी ले, और शॉपिंग भी अच्छी सी कर ले, सब सब कुछ ये पैकेज है पूरा। सो इज आई एग्री विथ यू दैट ये चीज़ होना चाहिए, बिकॉज चूजिंग एन ऑप्शनल इज लाइक चूजिंग योर लाइफ पार्टनर। ओके, इट्स वेरी ट्रिकी थिंग, बट anybody else, that what could be the parameter of choosing optional? Anybody? क्या पैरामीटर होना चाहिए वैसे ऑप्शनल का? ठीक है, anyway you can write यार, इतना उसमें दिक्कत नहीं, just write, tell us that you want, I mean this should be that you've been studying from your graduation, that's your subject, in your masters that was your subject, what was it? Yes Sachin? आप कुछ कह रहे थे सचिन? ओके, सो ऑप्शनल के लिए हाउ मच मार्क्स डज ऑप्शनल हैज, एनीबॉडी, एनी आइडिया? $500 marks, एक सेकेंड यार, मैं नीचे का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, स्कोरिंग, गाइडेंस प्रॉपर, बिकॉज ऑप्शनल इज गेम चेंजर, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, स्कोरिंग होना चाहिए, राइट, गाइडेंस प्रॉपर, राइट, यस, ऑप्शनल इज अ गेम चेंजर, एक्चुअली इट इज अ लिमिटेड सिलेबस, दैट्स गुड, ओके, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना हो मतलब। Subject studied so far, interest plus trend, I like it. That interest plus trend, you mean Nandesh that you can bend your motivation, you can bend your interest based on trend, right? And Abhishek, conceptual होना चाहिए, interesting होना चाहिए. Sir, it would be great if you could give some tips for working professional as well who wish to prepare for 20. Of course, why not? So, ऑप्शनल पे पहले आते हैं सैम, उसके बाद देन विल डिस्कस, ओके। 500 मार्क्स का क्वेश्चन होना चाहिए, एंड ऑप्शनल ऑफ कोर्स 500 मार्क्स 200 to 250 का होता है, और व्हेन यू टॉक अबाउट ऑप्शनल इज लाइक यू आर डाइविंग डीप इनसाइड ओशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। आपको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इट्स लाइक पूरा टॉप टू बॉटम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यू हैव टू सेलेक्ट ऑप्शन, ये दिमाग खोल के पूरा, ओके। डू नॉट सेलेक्ट ऑप्शनल, ये मेरा इंटरेस्ट है इसीलिए मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, भले उसमें स्कोरिंग नहीं होता, वो ट्रेंड में नहीं है, या उसमें मार्क्स डिडक्शन बहुत होती हैं, okay, so do not take, for example I'm telling you guys, there is subject economics, बहुत टफ है, मतलब लग जाती है लोगों की इकोनॉमिक्स में, I'm telling you guys, रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आता, yes there are people they have given, they took economics as their subject, optional subject, but नहीं चाहिए हमें इकोनॉमिक्स, हमें इकोनॉमिस्ट चाहिए ही नहीं। I'm just giving my perspective because लैटरल एंट्री से ऑलरेडी बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट गवर्नमेंट लेके आती है सर्विसेज में, हमें इकोनॉमिस्ट नहीं चाहिए, आप इतना डिटेल में मत पढ़ो, ओके। सो आई एम जस्ट गिविंग यू
a thought, a food of thought that you can analyze here, that what is important, what is not. So economy, it's risky to me. For me, it's risky. Okay, scoring subjects, of course, sociology वगैरह है, ये polity, agriculture, English literature वगैरह, Hindi literature, ये सारी हैं, IR है, maths है, physics and maths जिसकी they wanted to give this as an optional. Yeah, this is one of the very different stream. If they think that वही है, मतलब maths they can solve it, then please do go ahead. ऑप्शनल ऐसा होना चाहिए जिसके रिगार्डिंग इतनी प्रिपरेशन हो सके आपके पास कि उन ऑप्शनल के अच्छे से अच्छे स्टूडेंट से compete कर सकें. Yeah, competitions तो of course है, no doubt. So again, optional is a very tricky, and we must think 10 times before opting optional. There are students, पहले अटेम्प्ट में कुछ और ऑप्शनल था, दूसरे में कुछ और ऑप्शनल था, एंड देन थर्ड में पता नहीं. प्लीज अंधेरे में तीर मत चलाइए. ये यूपीएससी है, पूरा साल ले लेगा आपका. ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज द ओनली वन एरिया वेयर यू हैव टू फेस कॉम्पिटिशन. अदरवाइज you have you've got all the GS paper where all the questions are common. This is the only area where you can show your skill, you can show your talent. All the GS paper and essays, they are common for everybody. All the prelims and CSAT, that is common for everybody. But optional paper जो है वो common नहीं होता है सबके लिए. This is the right, actually जो कहते हैं ना कि जो यहीं पे लोहा गर्म है, यहीं पे मारना है. That's where you have to hit the iron. That you have to compete from yourself actually. वहाँ पे you have to dig deep inside the ocean and dig deep inside the subject and bring out that quality material. कहीं से भी पूछ दें, इससे आना चाहिए आपको. Okay? So that's what for optional actually. Sir, is there any way WhatsApp? Is there any who get them? That I will create because I think yesterday at launch I have requested Habitat to launch that club. That I will create that once we will have aspirants joining in. We will do it. Don't worry. ये वो याद है वो मूवी का there's a very popular movie सुनील शेट्टी की मूवी थी धड़कन. उसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि क्या था, तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता और मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये होने नहीं दूंगा. तो यही चीज़ है कि मैं नहीं भूलना चाहता आप लोगों को. आई डोंट वॉन्ट टू just leave you guys at your own risk. I'm here and I want actually to help you all. Okay, so stay with me, stay connected with me, and please ask questions, 1,000 questions, and I look forward you all to be part of that membership so that we all can sit. We'll have a classroom feeling and we can ask things, we can ask questions, clear our doubt, and work towards our absolute aim, that is UPSC Civil Services Examination 2022-2023. That is our absolute aim. Okay? So, before I should go, sir, is there any optional ऐसा होना चाहिए, working professionals and all? Yeah. So, एक बहुत पॉपुलर कोट था मार्टिन लूथर किंग. Martin Luther King was, he said that not everybody can be famous. Not everybody can be famous, but everybody can be great. And that greatness is determined by your service. Okay? वो कहते हैं कि ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है. ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है. ठीक है? So अभी आपने इरादा किया है, प्लीज उसको बरकरार रखिए और कोशिश कीजिए कि डेविएट ना हो इस बात से, क्योंकि we all are mature enough to deal with ourselves and understand that this is a very serious thing. We have to achieve it.
सर आई एम नॉट गेटिंग ऑप्शन टू परचेज. अरे ऑप्शन नहीं, फिर से कैसे बताऊं. ये देखो मैंने अभी एंटर मारा है एंड देन यू कैन हैव अ लुक हियर. डिड यू गेट इट? जस्ट ओपन योर मैसेज बॉक्स, or if you want I can show you here in the chat. I can present your screen, window, entire screen. Okay, now you are able to see my screen. On that screen here, ये है. और ये कहाँ पे अवेलेबल है, मैं अपने स्पेस का लिंक भी आपको शेयर कर देता हूँ. Okay, that everybody can see it, right? Yes no बोल दो एक बार, समझ में आ जाएगा. मैं अभी उसका लिंक शेयर कर देता हूँ आपसे एंड फ्रॉम देयर वी विल मूव फॉरवर्ड. एनीबडी, किसी को कोई क्वेश्चन, प्लीज आस्क, प्लीज आस्क. शर्माओ मत, पूछ लो. 2 मिनट तक लोग कहेंगे कि ये बेवकूफ़ था. नहीं पूछोगे तो जिंदगी भर लोग यही कहेंगे कि बेवकूफ़ था. सर ऐसे राइटिंग अभी से प्रैक्टिस करना, नहीं तो थोड़ा पढ़ के प्रैक्टिस करना सर. पढ़ के, अभी नहीं, पढ़ के. सर ऐसे राइटिंग अभी से हाँ, प्रैक्टिस क्योंकि करना, because नहीं we तो will थोड़ा पढ़ के understand प्रैक्टिस that, करना this सर. is my knowledge, this is what I have gained, this is what I have learned. 2 महीना On the basis एनसीईआरटी of that, पढ़ने के बाद. you have to learn, you have to write essay. ऐसे अभी मत लिखो आप. ऐसे you will write in February में, उस टाइम पे, okay, when you will complete your optional as well. Not now, अभी नहीं. First, you complete your NCERT, you complete your all the reference book, Lakshmikant and Okay, these sir. all, and then you start writing your what I was saying, essay and mains answer writing. Okay, anybody else? Sachin, do you want to ask something? Okay, sir. Sir, is that 30-day premium membership? Sir, it is that. Yeah, that is. That is actually for. I will extend that membership. That could be for 50 days as well. Okay, depend upon how much interaction you guys are doing, how much interest you are building. Okay. तो एक और चीज़ NCERT बुक्स वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. हाँ बिल्कुल, मैं लिंक शेयर कर दूँ आपको यहाँ पे, बट यू हैव लिंक फॉर ऐसे अनुदीप दुरेश. अरे वेरी, हाँ, अनुदीप जी की ऐसे इज वन ऑफ द कूल बेस्ट. यस यू कैन डू इट नंदिश, इट्स वेरी वेल. ओके, ये मैंने अपने लिंक का एक स्पेस दिया है. इज आई एम अवेलेबल हियर ऑन हैबिटेट, बट ऑथर सेलेक्ट कैसे करेंगे? ऑथर कहाँ पे? एनसीईआरटी में. एनसीईआरटी में यू गो विथ दिस क्लास and then select subject, that's it, and then download it. Author से NCERT का कोई मतलब नहीं. NCERT is NCERT. Okay, so yeah, so for those aspirants, please, sir, optional for optional graduation subject for human, for optional graduation subject or humanity subject. मैं समझा नहीं. अच्छा, okay. See, for optional, I'm telling you one strategy. Once you understand what is NCERT, once you understand what is the basic concept of history, geography, economics, polity, governance, okay, you will automatically get base that where my interest and where my contentment is going, in which subject, okay, that you will develop that interest. But do not think beforehand that no, I will take this subject, I will take that subject. No, that is why, ladies and gentlemen, I have been telling you NCERT is the base. When you will read NCERT, you will come up with this idea that, oh, I should take IR, I should take public administration, I should take sociology. So during the course of your learning from NCERT and the reference books, you will develop that interest, okay?
Sir, is it possible to crack UPSC in first attempt for a student who have started the preparation from the very beginning? Very good question, Bhagya Lakshmi. Yes, on the safer side, but बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, we have to work on ourselves. There are students who say that I self-study. What does that self-study mean? Self-study का मतलब होता है self-discipline भी. Self-study का मतलब होता है self-acknowledgement, self-doubt, self-questioning yourself, giving you feedback. अगर आप पढ़ भी रहे हो खुद से तो क्वेश्चन भी करो ना खुद से. कोई दूसरा थोड़ी आएगा क्वेश्चन करने के लिए. अगर आप खुद से सेल्फ मोटिवेट भी हो, सेल्फ डिसिप्लिन भी हो, ओके, मम्मी नहीं उठाएंगी आपको 5 बजे, या फिर आपका फ्रेंड नहीं उठाएगा, अलार्म क्लॉक नहीं उठाएगा. यू हैव टू बी डिसिप्लिन. सो भाग्य लक्ष्मी, देयर आर पैरामीटर्स. इफ यू विल अचीव इट, आई एम 200% sure that yes, there have been people, they have cracked it, they understood the concept. पढ़ लो एक बार एनसीईआरटी अच्छे से, रेफरेंस बुक, लक्ष्मीकांत को, रमेश सिंह को, सिंघानिया को, जीसी लियोन को, ये सब पढ़ लो अच्छे से. मैप्स को अच्छे से पढ़ लो, बढ़िया पूरा इस 3 महीने लगा दो, दिसंबर तक पढ़ लो अच्छे से. ऑप्शनल, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दैट learning, you will come up with that idea. Okay, I've got good interest here, I will read here, this is my optional. Okay, then sir, is it possible to crack UPSC GS2 with the top 30 rank along with self-study, or joining of coaching is self-required for completion of our subject with proper guidance in this short time? देखा जाए तो नंदिश बहुत टाइम है, और ऐसे देखा जाए तो बिल्कुल टाइम नहीं है. We have to understand the value of time. Time management बहुत important है. And yes, you should aim. Why top 30? Rank, consider yourself that I wanted to hit the top, that bottom, that the eye of the bird. पहली रैंक ले आनी है मुझे. Okay, just do it for that. And then, yes, it is possible. Why not? It is possible. Coaching की देखो, coaching आपको, the way I'm doing, coaching will also tell the same thing, or maybe less or more. Okay, but it's you have to do it, and that there should be one person, you might consider me, myself, that he is the right guy, he is my mentor, he is guiding me very well. I could tell him or her whatever problems I have, whatever situation I am facing during the course of this preparation. Your mentor is not only your mentor, it becomes your friend, and it's honorable friend actually. It's an honorable friend actually, okay? So consider your mentor as your friend. Do not hesitate to ask 1,000 questions. दिमाग खा जाओ उसका. Okay, it is possible. Of course, it is possible. आपको ही करना है, ये तो सब पता है, सिर्फ आपको ही करना है. Sir, can you tell me who is best teacher for anthropology, who is available on Telegram? Anthro के लिए, I think वो शुभ्रा रंजन मैम की क्लासेस में आप जाओ, शायद वहाँ पे एक एडुकेटर हैं, एंथ्रो पढ़ाते हैं. अरे नहीं मोहिनी, आते हैं क्वेश्चन, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द क्वेश्चन विल फ्रेम दैट इन मेंस एग्जामिनेशन बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ सॉल्ट लॉ विच महात्मा गांधी इनिशिएटेड and the consequences of it. अब salt law हम सबने पढ़ा है क्लास 9th में. What was salt law? ठीक है. Discuss the consequences of Cripps mission, which came in 1940s. क्या था Cripps mission? You have to understand it. Okay. What very very important question which has come in the examination. It comes every time. It's a part of social issues. और मैं आपको बता भी देता हूँ कहाँ से आया था ये. इकोनॉमिक्स में जाना, क्लास 9th के चैप्टर 4 या 3rd, पावर्टी का चैप्टर है. पावर्टी, व्हाट इज पावर्टी? हु मेजर्स पावर्टी इन इंडिया? एवरीथिंग हैज बीन मेंशन्ड हियर. सचिन, आप दो सचिन हो गए. एवरीथिंग हैज बीन मेंशन्ड देयर. ओके, सो डू नॉट टेक. यस, क्वेश्चंस आते हैं, भर भर के क्वेश्चंस आते हैं डियर.
अंडरस्टैंडिंग के लिए ही नहीं है. Unless you won't understand what is ABCD, you will not be able to frame a word or a sentence. Similar way, you have to read basic hai. You will not hear from any single mentor or any single topper or a civil servant who says that NCERT is not important. Okay? It is just matter of fact that you have already gone through with the NCERT, now it's your revision time, or you have not. Okay? So, I think we all set for today. Thank you so much, everybody. I literally want to see everybody in my session, in that my club, membership club. And मेरे एक स्टूडेंट ने कहा था, जब मैंने उसको बताया कि सिर्फ 200 रुपए का है, तो उसने ये बोला कि सर, पैसा खर्च करने से डर नहीं लगता सर, फेलियर से लगता है और नाकामयाबी से लगता है. और फिर ये तो फिर 200 रुपए की बात है. ठीक है? सो आ जाओ, वहाँ बात करेंगे, वहाँ डिस्कस करेंगे. सर जो हैबिटेट सब्सक्रिप्शन है 1 महीने के लिए 200 है सर, हाँ पूरा इंटरव्यू. हाँ, मतलब वो 1 महीने के लिए है. एंड आई विल एक्सटेंड जो हैबिटेट सब्सक्रिप्शन है 1 महीने के लिए 200 है सर, you guys are पूरा literally going towards your goal. You guys are doing what I'm saying. Then I will increase. Don't worry about it. Okay? So we will have many discussions, many important facts, and I'm going to take at least one video lecture in a week. Don't worry about it. मुझसे आपसे ज़्यादा मुझे फिक्र है कि and I'm proud of myself doing a nation building thing. Currently, I am building future civil servant. So I'm proud of myself that I am interacting with future civil servants, and you should be proud of yourself that you will be future civil servant. Okay? Chalo, thank you so much for your time, and I have shared my contact number. Please do join me. I shall see you on Habitat. Okay, all the best. Jai Hind, Jai Bharat.